थैंक यू सो मच अनीता जी। आपकी कविता से आपने बहुत ही अच्छे से ये बताया कि सुरक्षा का नहीं है कोई विकल्प हमारे पास, और सुरक्षित रहना हमारे लिए एक बहुत ही मुख्य कार्य है। एक देखिए, वी आर ऑल born in a world which we have not known before being born into it. So the world is unknown to us, it is uncertain, and it is full of potential harm and danger. I always say this: look at the, 2-3 kilos of flesh being born into this world, totally helpless and dependent on the caretakers. When I was doing my internship, I remember a cold night. रात का समय था और ओटी के बाहर हम लोग निकले कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करने के बाद, और देखा तो एक वेइंग मशीन थी, स्टील की, बच्चों की जो वेइंग मशीन रहती है। दिसंबर का समय था। उसमें एक a naked infant was lying over there, abandoned. कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो जहां हमारी इंटर्नशिप हुआ करती थी। Some mother had abandoned that infant and she had eloped, वो भाग गई थी वहां से उसको छोड़कर। मान लो अगर कोई उस बच्चे को ना देखे तो क्या उसके बस में है अपने आप को बचाना या अपने आप को सरवाइव करवा पाना? It was very fortunate that we crossed that corridor and we saw that infant, and we then took that infant to the NICU, and life-saving operations were done. He was warmed up and he was saved. So I want to say that, God has gifted us certain things to alert us towards potential dangers in our environment. हमारे बॉडी में ही कुछ इनबिल्ट अलार्म सिस्टम्स उन्होंने डाल के भेजे. And so I remember we have discussed this in the webinar on fearlessness, in the webinar on courage, in the webinar on confidence. We have discussed all these things earlier. As children grow up, it becomes our duty as teachers and parents to help them realize that they have to keep themselves safe consciously, actively. They have to take those efforts. And how can we do that? There are, my dear friends, many kinds of safeties, as Anita ji just elaborated. And to share with all of you, even the most intelligent people, most conscious and aware people are not safe in this world anymore. Only 4 days ago, I and my husband were subjected to a fraud, and we were, just saved. I don't know how, what, God gave us wisdom at the last moment, and we saved transferring 50,000 rupees to a fraudster's account only 4 days ago. So, I remember in our EVS book, there used to be a chapter on safety. So we used to teach children about certain kinds of, dangers in the environment, how to keep themselves safe, not to use sharp knives, how to cross the road, and all these things were given. But the dangers, the types of dangers have now become so different and varied that it has become imperative for us to discuss all of them. In today's session, I want to discuss 4 kinds of safety with you. One, of course, is the physical safety, which I am not going to discuss much.
What I'm going to emphasize on is the emotional safety, the psychological safety, and the cyber safety, the internet safety. How can we keep our children safe? We can have this idea, हम लोग को अंदर से ये लग सकता है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर ले, let us ourselves protect them. So let us not allow them to to go out of the house. Let us not allow them to stay with anyone. Let us not allow them to talk to anyone. That kind of protectiveness can actually damage their growth. So a better idea would be to help them to keep themselves safe. So I would like to have some ideas from you all. What can be some of the ideas which you can give me where we can teach them to keep themselves safe? आप लोग मुझे बताइए कोई आइडियाज चैट बॉक्स में, ऐसे कोई बातें उनको सिखाई जा सकती हैं क्या जिससे कि वो खुद को सेफ रख सके? आजकल हमारे लिए कंसर्न है लड़कियों की सेफ्टी का. वी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब तरीके की हरकतें और खराब तरीके की न्यूज हम रोज सुनते हैं, एंड वी हैव बिकम रियली scared of sending our girls anywhere. And in fact, बहुत ही, yes, Sonali Tikade, good touch, bad touch, we can teach them. लड़कियां भी नहीं, लड़के भी उतने ही असुरक्षित हैं. Emergency numbers, yes. Cyber etiquette, very good. Think twice, don't react immediately, Kalpana ji. What precautionary measure did you teach, Vishnu ji? Can you please elaborate it in the chat? Good touch, bad touch, have you already made it a part of your curriculums? There are now very good modules, specific, identify, or code word. Okay. Teach them to speak loudly about good touch and bad touch. Bank OTP, because students using parents' phones. Yes, yes. Say no to abusing. Talking their daily experience, yes. Express their feelings, Preeti. Aware of their safe circle, Khushbu, exactly. Few trustworthy adults. Who are their safe circle? Side effects or overuse of devices, yes. Yes, these are some of the very good ideas of keeping your children safe, teaching them safety. My dear friends, safety is an attitude. Before anything physical, before an action of safety, it is an attitude. How is it an attitude? I would like to show a video to all of you. It's a very small video, 2.5 minutes video. Just look at it and then we will brainstorm more about this. Give me a minute.
Can you all see my screen? Yes, we can. Yes. Screen is visible. Audio is not clear, ma'am. Audio is audio. There's no audio in this. Okay. Okay. सांस सांस तूफान बने, जब तिनका तिनका शस्त्र बने, खुद का सम्मान खुद करना पड़ेगा। हर बिटिया को अब दुर्गा बनना पड़ेगा। क्या आप अपना बिजनेस चलाते हो या बिजीनेस में चलते रहते हो? Yes, I'm asking you this question. If you as a business owner are constantly stuck in firefight, Friends, as I said, safety is an attitude. We don't have to necessarily confront, act, or fight. If we can give this, yes, confidence, courage to confront the adversity, the potential danger or harm, that in itself is a major component of keeping the dangers at bay. So, for any kind of safety, I want to tell you about two principles. There are two ways to teach safety to your children. One, be aware of the potential dangers. Create awareness about it. My dear friends, as parents and as teachers, it has become necessary for us to talk to our children about what can be potentially harmful or dangerous on the internet, outside the internet. If there is no discussion, if there is no awareness in their minds, आपने कोई वीडियो देखा होगा जिसमें एक छोटा बच्चा सांप को ऐसे पकड़ के उसके साथ खेल रहा है, because he is not aware that this can be dangerous and I can lose my life over there. So unless you make your children
aware about the potential dangers, they cannot develop the ability to keep themselves safe from them. And second principle is to establish boundaries. If they are able to establish a boundary between the danger and themselves, they know the point of return. किस बाउंड्री के बाहर जाना ही नहीं है, कहां पर रिस्क लेनी ही नहीं है, कहां पर एंटर ही नहीं करना है, कौन से जोन में. If they are able to understand this, they are able to keep themselves safe. So what can be the boundaries that we can teach them for physical safety? Can you give me some examples in the chat? Physical safety के लिए हम कौन से boundaries दे सकते हैं? Please don't comment, send irrelevant comments. Please only answer what I am asking you to answer. Physical safety के लिए कौन सी boundaries हम उनको सिखा सकते हैं? Any answers, please? Like you were talking about good touch, bad touch, all these things. तो हम क्या सिखा सकते हैं? कौन सी physical बात? Maintain a distance while talking. Self-defense. Yes. Yes. ये तो action हो गया. Boundary बताओ मुझे. Boundary कौन सी सिखा सकते हैं? This is awareness, what you are talking. What boundaries we can establish? जैसे we can do a role play with them. Yes, Dr. Raghavendra, exactly. Not going to the toilet when the school is vacant. Don't talk to unknown people. Not to allow anyone to touch them. And when we teach them good touch, bad touch, we actually do a role play with them. और आप उनको बताइए, ऐसे करके उनको बताइए और पूछिए, ये टच आपको कैसा लगा? उनकी पीठ थपथपाइए और पूछिए, ये टच आपको कैसा लगा? उनका कंधा दबाइए और पूछिए, ये टच आपको कैसा लगा? Shake their hands and ask them, how did you feel? What was this touch like? They will say, this was comfortable, this was a good touch. And now pinch them and ask, how was this touch? No, this was painful. This was uncomfortable. First, let them differentiate between what feels comfortable and what feels uncomfortable. What feels like a good touch and what doesn't feel like a good touch. And then tell them that bad touches make us feel uncomfortable. We don't like them. We would not like to experience them. And then tell them, I would request Vishnu to please not comment when I am talking. Please comment only when I ask you to do that. Because you are taking away the attention from what I am trying to say. So friends, when I say the center part of your body, your lips, your chest, your genitals, they are most protected. यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी एक उम्र के बाद आपको टच नहीं कर सकते. आपने उनको एक बाउंड्री बता दी. आपने उनको बता दिया कि जब आप किसी से नमस्ते करते हैं, आपने एक बाउंड्री अपने अराउंड बनाई और सामने वाले की जो बाउंड्री है, उन दोनों का कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ.
जब आप किसी से शेक हैंड करते हैं तो आपने अपनी बाउंड्री से अपना हाथ बाहर निकाला और सामने वाले ने भी बाउंड्री से हाथ बाहर निकाला और तब आपने हाथ शेक हैंड्स किए like this. So this is your boundary and this is the other person's boundary. When you are doing namaste, you are both maintaining your boundary. But when you are shaking hands, आप बाउंड्री से बाहर निकल के आपने शेक हैंड किया. जब आप किसी को अपने आप को गले लगाने देते हो तो ये जो बाउंड्री है इसके अंदर आप किसी को एंटर करने देते हो. तो ये जो बाउंड्री है जिसमें आप किसी को एंटर करने देते हो, they should be safe people. They should be close people. They should be known people. They should be your family. They should be your friends. But my dear friends, it is said, the research is saying that there are sexual crime के जो perpetrators हैं वो family से भी आते हैं, friends से भी आते हैं, known लोगों से भी आते हैं. तो then you have to tell them, unless you feel good, you do not have to let anyone enter into your boundary. This is teaching them to establish boundaries around themselves, invisible barriers around themselves. This, my dear friends, will go a long way in helping them understand how to keep themselves safe when you are not around. Are you all with me till now? आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं? Physical boundaries समझ में आई सबको? Please say a yes or no in the chat. Great. Now we will go to emotional safety. My dear friends, as important as physical safety is emotional safety of our children. Arvindji, can I request you to please run my PPT? So what is emotional safety? Can anybody please answer? Emotional safety से हम क्या कहना चाह रहे हैं? No, Preeti, it's different than resilience. आप इसको रन कर दीजिए, एक बार आगे बढ़ाइए स्लाइड्स, अरविंद जी. Why, Dr. Clarence? I love you कहाँ से आ गया इसमें? आगे चलिए, आगे चलिए, चलते जाइए, जब मैं रोकूंगी तब रुकिएगा आप. हाँ, बस रुक जाइए, इससे पहले रुक जाइए. So, my dear friends, Maslow's hierarchy of needs, जहां पर हमने देखा safety is not a choice, it is a need. We all want to be safe. We all want to survive in this world. So, देखिए Maslow's hierarchy of needs में ये सेकेंड नंबर पर आ रही है, जहां पर सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट होती है, फूड की नीड, शेल्टर की नीड, और उसके बाद जो हमारी नीड आई वो है सेफ्टी की नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. क्या हम ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमें कुछ डेंजर नहीं पहुंचाएंगे? क्या हमारे सर पे एक छत है? क्या हमारे पास कल के लिए खाना है? दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेफ्टी. So emotional safety becomes a very important part of survival, because if we do not have some safe people to go to, अगर हमारे पास कोई safe places नहीं है तो हम हमेशा insecure feel करते हैं, और insecurity अगर हमारे मन में रहती है तो हम relationships में और हम दूसरे किसी भी काम में खुश नहीं रह पाते. Next please. So providing emotional safety to children
psychological researchers are saying it makes them feel safe, secure, and confident. Next. Here, the role of teachers, parents, guardians, and community is very, very important. एक बार stop कर दीजिए sharing. So I want to ask you all, can there be certain ways in which we can help children and adolescents feel safe with us? Emotional safety provide करने के कोई तरीके हो सकते हैं क्या, जिससे वो हमारे साथ हमारे पास सुरक्षित महसूस करें? Can you please give me some answers in the chat box? Friendly climate, healthy relationship, very good. Samiksha ji. Empathy, warmth, validation, yes. What else? Take them into our confidence. Be non-judgmental. Yes. Allow them to express their emotional ups and downs with you. Yes. What else? Be good listener. Santoshi, very good. Exactly. So these are few ways in which we can provide emotional safety. Emotional safety का actually मतलब क्या है? Emotional safety का मतलब है उनको ये feel कराना कि आप जब weak हो, vulnerable हो, तो भी आप हमारे सामने अपने आप को as it is present कर सकते हो. हम आपकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर फिंगर नहीं उठाएंगे. जब आप मिस्टेक्स करते हो तब हम आपको सूली पे नहीं चढ़ा देंगे, हम आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे. This is what we mean by providing emotional safety, to give them the space to feel vulnerable, to express themselves as they are from inside. So let me give you a few steps, few tips to provide emotional safety to your children, whether in the school or in your own homes. So can you please run the PPT once again? Next, please. Next slide, please. So these are the 6 ways I could think of. First is listen attentively. जब बच्चे हमसे बात करें और खासकर वो कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत important है. They have come to you from school and they want to share some incident with you. They want to complain about someone. They want to say something. They are looking sad or upset. What you need to do is keep everything aside at that moment. That moment is very, very important. You may say, I will come in 5 minutes. Let me just finish this work. You know what will happen? You are giving the message to the child that your problem can wait, your sharing can wait, my work is more important at this point of time. Then the child may lose the confidence of sharing it with you because they need to garner a lot of courage to come and share their things with you. So the moment when they are asking you for attention is very, very important. At that time, if you are looking in your phone, if you're doing something else simultaneously, they will not be able to share. So giving them attention, undivided attention, looking at them, your body language, थोड़ा सा सामने होकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर, उनके एक्सप्रेशंस को नोट कर एक्टिवली लिसनिंग, ओके, पैराफ्रेज करना जो उन्होंने बताया,
that will give them the safety, the feeling of confidence that you are there, you are listening, you are interested, you want me to share whatever I am going through. That is the first way to provide emotional safety to children. Next, acknowledging their feelings. Children have lots of feelings. The problem is they are not able to pinpoint, they are not able to identify, they are not able to describe them exactly as they are going through. उनके पास उतनी vocabulary नहीं होती, उनके पास उतना expression नहीं होता, उतना language नहीं होता, but they go through a lot of emotions. So, if you dismiss, अरे नहीं ऐसे नहीं होता. If you say, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? If you say, नहीं तुमने ही ऐसा कुछ किया होगा, तुम ही ऐसे हो, you have lost the opportunity to make the child feel safe emotionally. So you have to acknowledge the feelings, even if you think that they're trivial. For them, it is not trivial. For you, it might be trivial. Next, third. Next slide, please. I always emphasize on this, non-correctional methods. We are always in a haste to correct. When a child makes mistakes, you have to look at the age of the child. बच्चा है, गलती कर सकता है. हम लोग इतनी गलतियां करते हैं, तो बच्चे से भी तो गलती हो ही सकती है. There is ample time to correct. एकदम से impulsively, immediately correct करने की कोई भी जरूरत नहीं है. When you are listening, when the child is sharing, please hold back your impulse to correct. Be non-correctional. Next. Respect them and their opinions and encourage them to speak. Even if you don't agree with them. कोई जरूरी नहीं है कि आप वो जो बोल रहे हैं उससे आप agree ही करते हो. But at least you can, help them to share whatever they want to share. I'll share an example with you over here. Can you please stop sharing? So, my son Shailesh, he is now studying in second year. I hold parenting workshops, as you all know. So I have taken some consent from him. कुछ examples share करने के, because once he said that you have to maintain confidentiality. मम्मी आप मेरे example कैसे अपनी workshops में share करती हो? तो I said अच्छा ठीक है, मैं कुछ specific examples का consent ले लेती हूँ तुमसे. So ये consent लिया हुआ example है जो मैं आप लोगों से share कर रही हूँ. So he was in 9th standard at that time, and he came back from his hostel, and we were sitting in a car. My husband had gone to the railway station to receive my parents. और हम लोग बाहर स्टेशन के बाहर गाड़ी में थे. So he told me, you know what? Having a girlfriend has got certain advantages. So I said, oh, अच्छा, क्या advantages? मुझे तो नहीं पता. Boys who have girlfriends always are good in academics, because she herself studies and she makes you study. She doesn't let you go here and there. I said, wow, that's a great advantage of having a girlfriend. Wow, that's a great one. So you already have a girlfriend, or you want to make one? I neither have one nor I want to make one, because अभी मुझे कोई ऐसा पसंद नहीं आया. But I just wanted to share with you that there is, पेरेंट्स को लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब झंझट है और इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, ये होता है. I wanted to make you aware that there are advantages. So I said, thank you so much for making me aware. I really didn't know about it. Now, my mother comes. वो आ गए स्टेशन से, and she started entering into the car. He said, thank you, Nani. My mother said, I have not given you anything. अभी तो मैं तुझे दे ही नहीं पाई कुछ जो मैं लाई हूँ. अभी से क्या thank you? ये आपने मुझे इतनी understanding मम्मी जो दी है.
So that was all he wanted to say. I just imagined at that moment, if my husband would have been in the car, तो ये बात ये share करता क्या? My husband would have immediately said, तू 9th में है, 14-15 साल का हुआ नहीं, अभी से तुझे गर्लफ्रेंड की बातें आ रही है, तुझे हमने वहां पे पढ़ने भेजा है कि ये सब बातें करने भेजा है? That would have shut him down absolutely at that moment. And so he chose a time when father was not there, and he had an emotional safe place to himself to say something like this. You know, my dear friends, I might not agree to everything that he shares with me even till now, even today. But that doesn't deter him to share his things with me. You may disagree, but at least first listen. At least give them the space to come and share their opinions. Respect them as individuals. That will give them the emotional safety. और एक बात बता देती हूँ आप सबको, आप यहाँ पर टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं. अगर आप ये इमोशनल सेफ्टी नहीं देंगे तो कोई और देगा, और जो कोई और होगा वो उसकी प्राइस भी लेगा आपके बच्चों से. Better you provide this safety to your children. Yes. Next, Arvind ji. Assert your availability and accessibility. So, my dear friends, आपके बच्चे छोटे से रहते हैं तब से उनको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं. What are your whereabouts? Where will you be available? उनके पास आपका फोन नंबर होना चाहिए. उनको ये पता होना चाहिए आप ऑफिस जाते हैं, आपके टाइमिंग्स क्या हैं, कब आप वापस आते हैं, ऑफिस में कहाँ रहते हैं. All these things help them feel secure that if they want to access you, you will be found here. Otherwise, they feel insecure in their mind. Please stop sharing. So I was at Anita ji's house last month. Her daughter left her two twins, infants, घर पे छोड़कर उनको कहीं गई. तो मैंने उससे कहा आप बच्चों को बता के जाओ. बोली ये तो 1 साल के ही हैं, तो उससे क्या हुआ, तब भी इनको बता के जाओ मैं जा रही हूँ, इतनी देर में लौट कर आऊंगी. They should know where you are when you go outside and when will you come back. And if you get late for any reason, inform them. That helps them to feel secure about your availability and accessibility. Assert that I am there with you. And the 6th thing, my dear friends, children are small. उनकी height तो देखो, 2nd, 3rd, 4th, 5th में, 8th, 9th में जाकर थोड़ी height हमारे बराबर आने लगती है. उसी तरह उनका मन भी कोमल रहता है. They get traumatized easily. So you have to be in their team. You have to tell them, अगर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गलत होता है, I will stand up with you. You have to trust me. And you have to follow up through this promise, my dear friends. Then they feel emotionally safe. My dear friends, I'll quickly also go through psychological safety. I am taking too much time because this topic important है और थोड़ा सा vast भी है. Psychological safety is slightly different from emotional safety. That's why we are having 2 different terms. Psychological safety में हम लोगों के 4 steps, 4 stages. First is the feeling of being included in the group. एमी एडमॉन्सन ने ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट दिया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पर ये स्कूल्स के लिए या किसी भी फैमिली ग्रुप के लिए भी उतना ही उपयुक्त है, उतना ही रेलिवेंट है. जब हम
4 लोग बात कर रहे होते हैं और 5वें को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको कैसा लगता है? He feels very disturbed and upset. और मान लो वो उधर बैठा है और हम लोग टिफिन खा रहे हैं और खाते खाते हम हंस रहे हैं, उसको जरूर लगेगा मेरे ऊपर हंस रहे हैं. So first step of psychological safety is to include people. Second, आपने include तो कर लिया. Have you provided the safety to learn in the group? Especially important in the school context. Have you provided the safety to ask questions? Have you provided the safety to be curious? Third, the safety to contribute. Have you provided the safety to suggest some ideas? मैम, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं. मम्मी, दिवाली के डेकोरेशन में ऐसा करें तो? चुप बैठो. तुमको क्या पता है कितना खर्चा होता है इन सब में? हम नहीं लाएंगे इस बार. आगे से कोई सजेशन देगा ही नहीं. So safety to contribute. And the fourth step is the safety to challenge. अगर उसको कुछ गलत लग रहा है, अगर उसको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो चेंज होनी चाहिए, he should feel safe to say it. कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम ऐसा क्यों करते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए. You may or may not accept that suggestion, but they should feel at least safe to challenge. These are the 4 kinds of psychological safeties that you can provide to children. Now let us come to the internet safety. We can skip this part and I can share the PPT with you, but there are certain things which you need to keep in mind. My dear friends, as teachers and as parents, we ourselves are not aware about the cyber safety rules and regulations. CBSE has come out with a 98 pages book on it. NCERT has also come out with certain documents and videos. Have we gone through it? Have we at least told our children कितने एज में इंस्टाग्राम पे यूजर प्रोफाइल बनाना चाहिए? हमको पता है. कौन से एज में आप फेसबुक पे जा सकते हैं? किस तरह का ईमेल आईडी बनाना चाहिए? पासवर्ड की सिक्योरिटी कैसे की जाती है? जब कोई स्ट्रेंजर पर्सनल चैट पर आता है तो उसको कैसे ब्लॉक किया जाता है? अगर कोई आपसे अकेले में मिलने का या कोई चीज गिफ्ट देने के बात करते हैं तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? My dear friends, first we have to become aware of it. Only then we can make the children and adolescents aware of all these things. Cyber crimes are on a great rise, and unfortunately, we are losing our children to them. We have to become aware. BTS क्या है? किस तरह के ये games हैं जो ये लोग खेल रहे हैं? There were children exposed to dangerous games in our country in the past, and they are still. What kind of screen time are you allowing? What kind of rules and regulations are you establishing in collaboration with them? This has to be one separate session on cybersecurity sometime, my dear friends. And also, I want to tell you about the HEMA Foundation Safety Project. Like all the projects, we have made this project for you all, which you can implement in your schools. I'll quickly take you through it before winding up the session. So once again, can you please share the PPT? आप एकदम लास्ट में चले जाइए पीपीटी में, अरविंद जी, लास्ट के फ्यू स्लाइड्स पूरा छोड़ दीजिए ये, फॉर आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम. इसको पूरे को छोड़ दीजिए, एकदम लास्ट की 4-5-6 स्लाइड्स मुझे बताने दीजिए. दिस दे कैन रीड ऑन देयर ओन. यस यस, बस 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 बस, आगे आगे, नेक्स्ट next, 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 next.
Next. Yes. So the first one is helping the children make an emotional safety plan. इस सेफ्टी प्लान में 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट में आप उनको बताएंगे कि जब उनको इमोशनली अनसेफ फील हो तो उसके ट्रिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरह की फीलिंग होती है जिससे उनको समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पर कुछ अनसेफ है. सो दे शुड अंडरस्टैंड कि ब्रीदिंग हैवी हो रही है या हार्ट में पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई एम फीलिंग इमोशनली अनसेफ. सो आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर्स. सेकेंड इज जब ट्रिगर्स हो और आप अनसेफ अपने आप को फील कर रहे हो किसी के कुछ बोलने से या किसी के कुछ करने से, तो उस वक्त आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह की होनी चाहिए. तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज उनके साथ डिस्कस करें टीचर्स और उनको वो सिखाएं. इसको हमने बनाया सेफ्टी टूल बॉक्स या कोपिंग टूल बॉक्स का नाम दिया है, जिससे कि उनके पास रेडी टू यूज सम कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो when they feel emotionally unsafe. And third is their safety network, जहां पर वो 4 लोगों के नाम और नंबर अपने पास रखें. My mother, my father, my teacher, my sibling, whoever is available, I will immediately go to them and tell about my experience, whatever I have felt. मैं अपने आप नहीं डिसाइड करूंगा कि ये ट्रिवियल एक्सपीरियंस था, इसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, सारा मैं बताऊंगा ही. That is the emotional safety plan. इसके लिए हमने वर्कशीट्स भी बना दी है आपको हेल्प करने के लिए. You can use those worksheets as it is or you can make your own. इसको बढ़ा दीजिए आगे. Next. सेकंड पे आ जाइए. सेकंड पे इंटरनेट सेफ्टी. इंटरनेट सेफ्टी के लिए जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसमें आपको क्या करना है, बच्चों के 5-5 के ग्रुप्स बनाकर इंटरनेट सेफ्टी पर उनके पोस्टर प्रेजेंटेशन करवाना है. और वो पोस्टर्स हमारे को भी आप अपलोड करके बता सकते हैं डैशबोर्ड पर, वेयर दे फाइंड आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इटसेल्फ एंड दे मेक लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पोस्टर्स. और आप एक पोस्टर एग्जीबिशन कराइए, हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ ऑन इंटरनेट. देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप बच्चों को लेक्चर करते हैं तो वो आपकी बात नहीं मानते, उनको वो बहुत बोरिंग लगता है. पर जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनसे काम कराते हैं तो वो खुद भी सीखते हैं, हमें भी सिखाते हैं और उन बातों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं. तो सेकेंड प्रोजेक्ट है हमारा इंटरनेट सेफ्टी. नेक्स्ट, इसको भी बढ़ा दीजिए आगे पीछे. सेफ्टी स्कैन. एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अनसेफ है और जिससे हमारे बच्चे अनभिज्ञ हैं. दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन देयर एनवायरमेंट इन द हाउस एंड इन द स्कूल. इन सेफ्टी स्कैन वी आस्क देम टू मेक टीम्स एंड डू अ रेकी. पूरे घर का, पूरे स्कूल का सर्वे करना है और देखना है कहीं कोई पोटेंशियली डेंजरस चीज तो नहीं है. कोई वायर खुला पड़ा है, अनअटेंडेंट है, कोई पाइप या कोई नुकीली चीज दिख रही है जो किसी के सर में लग सकती है, कहीं से कोई पत्थर या कोई प्लास्टर गिर रहा है जो कहीं गिर सकता है, कोई गड्ढा है जिसमें कोई गिर सकता है, कोई टॉयलेट है जो बहुत ज्यादा गंदा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को डराता है. जो भी अनसेफ चीजें पूरे एनवायरनमेंट में है उनका एक सेफ्टी स्कैन करें, उनकी पूरी लिस्ट बनाएं और अथॉरिटी को जाकर प्रेजेंट करें, घर में और साथ में स्कूल में भी. स्कूल की चीजें स्कूल में बताएं और घर की चीजें घर में बताएं. मम्मी यहाँ पर मैंने देखा कि गैस की बहुत गंदी स्मेल आ रही है, देयर इज समथिंग, आप पूरा चेक कर लो एक बार, कोई गैस का सिलेंडर में लीकेज तो नहीं है, समथिंग इज देयर. इससे क्या होगा, बच्चों को आगे की लाइफ के लिए माइंड में सेफ्टी स्कैन करना आ जाएगा. नेक्स्ट, इमोशनल सेफ्टी अवेयरनेस. इस एक्टिविटी में, नेक्स्ट करिए 1 मिनट. इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, पीछे इसमें हमने, अच्छा इसकी वर्कशीट नहीं है इसमें, आई विल शेयर ऑल द वर्कशीट्स इन द मेल. जो हमारा मास मेलिंग है उसमें अरविंद जी शेयर करेंगे सबके साथ. इसमें हमने एक वर्कशीट बनाई है
जिसमें हमने उनको ये लिखा है कि 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जिनके साथ आप सेफ फील करते हो, दूसरी तरह के लोग हैं जिनके साथ आप अनसेफ फील करते हो। उनके नाम मत लिखो, पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर हमको बताओ। उनमें जिनमें सेफ फील करते हो उनमें आपको क्या अच्छा लगता है, और अनसेफ फील करते हो उनमें क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या फील होता है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी में वो खुद क्या कर सकते हैं दूसरों को अपने साथ सेफ फील कराने के लिए। दिस कैन बी अ ग्रेट एक्टिविटी टू मेक देम अवेयर अबाउट देयर ओन टोन ऑफ वॉइस, देयर ओन बिहेवियर, देयर ओन कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स, देयर यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों के साथ वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्कूल में अपने जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कभी कभी माँ बाप के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। सो दिस एक्टिविटी हेल्प्स देम टू become aware of their own conduct. And fifth one is making a presentation on safety from bullying and doing this presentation in groups in other classes. जैसे मान लो आपने 7th A का presentation बनवाया और फिर उनको बोला कि ये आप 6th में जाकर करके आओ, और आप जो है 6th वाले 6th B में कर आओ. So they all are creating this awareness amongst themselves in the school. आप कोई lecturing नहीं कर रहे, आप केवल उनके presentations बनवा रहे हो, उनको check कर रहे हो, उनको suggestions दे रहे हो, और वो खुद इस awareness में खुद ही लग गए. So this is the HEMA Foundation Safety Project which I would like you to implement. ये सारे projects जो हैं ये HEM Virtues Award के लिए हम लोग इस बार संज्ञान में लेंगे, इनको evaluate करेंगे. Thank you so much.